Hi, we are going to wait for a couple more minutes so that more people can join. Hi, Vikas. Thank you so much for joining. I'm waiting for a few more people to join, then we can start. Okay, three people have joined so far. I'm so sorry for joining late myself. I don't know आप लोग कौन से रीजन में है बट एनसीआर रीजन में तो काफी आंधी एंड तूफान था सो यहाँ पर लाइट आउट एंड स्टफ हो गया सो that's why I got a little late. So let's wait for 1 or 2 more minutes and then we'll start. For those of you who do not know what this video is going to be about, it's going to be about how to build a career you don't need to escape from. Oh my god, I shouldn't have used golden color, but I used so now I'm stuck with this. So this is all about how we are going to talk about how कॉर्पोरेट बर्नआउट इज अ रियल थिंग आज की डेट में जॉब अच्छा है बुरा है कैसा है कहाँ पर है उससे ज्यादा पेनफुल थिंग इन टुडेज टाइम्स इज कि बर्नआउट हो रहा है कि नहीं अगर बर्नआउट हो रहा है तो इवन इफ यू आर वर्किंग इन गूगल और लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट amazon if you are mentally burning out तो I mean that job is as good as zero. तो उसी के बारे में बात करेंगे देन वील आल्सो टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आस्क पीपल कि आप कहाँ पर जॉब करते हो एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व इफ यू हैव एनी questions and if you feel that you need to escape from your current career and move to a different one, right? I feel specially qualified to take this live right now because I am an engineer. I did my engineering for 4 years. I worked as an assistant software engineer, as an assistant systems engineer with TCS for 1.5 saal. Then I started preparing for CAT because I was not, happy in that job. I wanted to move. I wanted to do something different. I wanted to get into marketing. 1.5 साल जॉब करने के बाद एमबीए की तैयारी की कैट दिया कैट देने के बाद आई क्लियर्ड कैट वेंट इनटू आईआईएम वहां पर जाकर के समझ आया दैट आई एम नॉट जस्ट रनिंग आफ्टर मार्केटिंग आई एक्चुअली लव मार्केटिंग जब मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के समझ आया आई आई अंडरस्टूड दैट आई वांटेड टू गेट इनटू मार्केटिंग मेरा करियर आई एम सो सॉरी माय करियर वाज मोर अलाइंड टुवर्ड्स कंसल्टिंग मेरी प्रोफाइल ऐसी थी आई वाज अ 998 and 998 is 9 in 10th, which is 90% and above in 10th, 90% and above in 12th, and then 80% in your undergraduate. तो मेरा प्रोफाइल प्लस आई वाज फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड आई हैड वर्क एक्सपीरियंस मेरी प्रोफाइल वाज मोर अलाइंड टुवर्ड्स कंसल्टिंग और मेरे को सिर्फ कंसल्टिंग के ही शॉर्टलिस्ट आ रहे थे बट I had been in a space जहाँ पर मेरे को पता था that I was not mentally happy, so I wanted to move. Neeraj is asking, I'll take your question, Neeraj. Let me just complete my story. Uh, तो फिर कॉलेज में मेरे को सिर्फ कंसल्टिंग के शॉर्टलिस्ट आ रहे थे एंड आई डिडंट वांट टू गेट इनटू कंसल्टिंग एट ऑल तो मेरा इंटर्नशिप भी कंसल्टिंग में था
And there's a thing in colleges where you cannot say no to companies. If they hire you, you have to consider yourself lucky. And I think that's a thing in India only. We sometimes do not get the privilege to say no to a company and choose a career, because job market is so saturated. There are so many people. So behal, I got that job. इंटर्नशिप के बाद फाइनल प्लेसमेंट्स में आई वाज वेरी एडमेंट कि मेरे को मार्केटिंग में ही जाना है. आई गॉट इनटू मार्केटिंग. आई वाज अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर टाटा स्टील फॉर 1.5 ईयर. 1.5 साल तक आई वाज अ मार्केटिंग मैनेजर देयर. वो करने के बाद समथिंग और द अदर हैपेंड एंड लाइफ led me to even leave that job. I mean, Tata Steel is a good company, almost government like. मार्केटिंग मैनेजर प्रोफाइल कितना अच्छा है. 1.5 साल वहां जॉब करने के बाद आई इवन लेफ्ट दैट. सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, आई हैड टू लीव दैट. एंड currently with the AI boom that is happening, I got very lucky कि हमने राइट टाइम पर जहाँ थे वहां से मूव किया. And by God's grace, I am an AI product manager today. And I every day I am working around new technologies, new flows, new STT models. हर दिन उनकी testing, which model is working better, how to incorporate a different model, deepgram versus soniox, batching, entity extraction, etc., etc. My day to day looks like talking around these terms every day. So, which is a good opportunity which I'm getting. So, coming back to why I decided to do this live. So again, this is a very bad color. This is a silver color that I've used. So I don't know if you can see. So anyway, uh, दो दिन पहले क्या yesterday, I don't know if you guys are following me on Instagram. Yesterday I posted a reel on Instagram, and that was just a song that I really really liked. And uske around I'm very passionate about editing and stuff. So uske around I posted a reel, and वो पोस्ट करने के बाद I felt that a lot of us are working very hard for something that we don't even enjoy doing. I just enjoy listening to a song, and I like editing, so I did that. And that's just a hobby. But in our day to day life, the thing that is giving us our bread and butter, उस चीज में हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, घिस रहे हैं, but we are not enjoying what we are doing. And it is so sad कि आप अपनी लाइफ का मेजर चंक वो करते हुए बताओ जो काम आपको पसंद ही नहीं है. So that's why I thought about talking about career, burnout, ambition, how to actually build a life around doing something that you actually like. Because I have switched roles. I was an engineer, then a marketing manager, and today I'm an AI product manager. I have done all of these things, and I have landed in places which I wanted to do, and then I've gotten out of places which I didn't want to do anymore. So I thought I am particularly qualified to talk about what I'm talking about today. The escape route. So सबसे पहले तो let's talk about the science. Signs that you are not actually happy with your current job, in your current position. Signs that you are actually in wrong career. ठीक है. तो क्या होता है ना, I'll tell you signs क्या होते हैं. How did I, how and मेरे लिए क्या identifying moment था जब मेरे को समझ आने लगा था कि this is not for me. अ, तो काम तो होता था 9 to 5, 9 to 6. दिस इज एवरीबॉडीज, सबकी लाइफ है शायद ये यहाँ पर ना वो 9 to 6 के बाद आई नो वी आर ऑल फिजिकली टायर्ड,
बट इवन ऑन डेज जब आई वाज नॉट फिजिकली टायर्ड, रिकवर करने के लिए हम लोग को वीकेंड्स मिलते हैं, आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक इवन वीकेंड्स आर नॉट इनफ. Mentally I was exhausted. Even if I would take leaves, go on, I would take long weekends ka chutti, I would not be okay. I would sleep for hours, and I would take time for myself to recover, and I would still be tired, emotionally tired, burst. मतलब आई एम क्राइंग, कहीं कहीं पर भी बैठ करके मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकल आ रहे फॉर नो रीजन. एंड आई वाज वर्किंग इन वंडरफुल प्लेसेस, डूइंग वंडरफुल थिंग्स जो लोगों के ड्रीम जॉब्स है, but I was just not happy. So those were my signs of identifying ke mera mentally I'm not happy here. And that is when I would analyze myself, and that's how I would, you know, think of an exit strategy. And you know what? Burnout जो होता है ना, burnout हमेशा overwork नहीं होता है, या long work hours nahi hote hain. It's many a times it's misalignment, especially in India when we do not get the opportunity or we do not have the leeway to choose our own career अपने choice से. तो I'm sorry, बहुत सारे questions है ना. I think I'm missing out. हम एक दो question ले लेते हैं. नीरज पावस्कर, आप अभी भी चैट पर हैं क्या? कैन यू जस्ट लाइक, ओके यू आर हियर. ठीक है, आप योर क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केटिंग ऑल अबाउट इन ब्रीफ फॉर लेमन. मार्केटिंग क्या होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस, कोई भी चीज आप उठा लो, पर्सनल, पर्सनालिटी, यू योरसेल्फ, लेट्स से आपका कोई कंपनी है, लेट्स से आप ये पेपर, लेट्स से आप पेपर बना रहे हैं नाउ. पेपर, आप कौन से आप अब लेट्स से क्लासमेट की जो कॉपीज होती हैं, आप लेट्स से आप अपना नीरज नीरज नाम से आप कॉपीज प्रिंट करना स्टार्ट करें. नाउ योर जॉब विल बी टू सेल आउट दोस कॉपीज. वो बिकेगा कैसे? जब लोगों को अवेयरनेस होगा. तो अवेयरनेस फैलाना, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, टॉप ऑफ द ब्रेन रिकॉल बनाना, एंड ब्रांड आइडेंटिटी बनाना. वो सब हो जाएगा. तो उसके बाद once you have your brand established, उसके बाद need, desire, ये सब पैदा करना, and ultimately nudging the people to take action. So this is the thing that I'm talking about is AIDA model, which is awareness, interest, desire and action. This is something that marketing revolves around. कोई भी product हो, ये चीजें आप 4 चीज़ें कर दो, आप अपने ब्रांड का या अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस बना दो, लोगों का इंटरेस्ट जगा दो, उनको बोल दो कि यार तुम आज की डेट में इफ यू आर राइटिंग ऑन कॉपी एंड यू आर नॉट जस्ट वर्किंग ऑन लैपटॉप, यू आर मतलब आपको चीज़ें याद रहेंगी और सेइंग समथिंग टू क्रिएट डिजायर, एंड देन उनको बोलना कि आपके पास कॉपी नहीं है, आप एक्शन ले लो, मेरी कॉपी खरीद लो. सो दैट इज मार्केटिंग. ये 4 गोल्स बेसिकली सेल्स आपकी कंप्लीट करने के लिए, आपके प्रोडक्ट बिकने के लिए आप जो-जो एक्शंस लेंगे, दैट इज़ मार्केटिंग. आई विल टेक मोर क्वेश्चंस बट आई हैव टू कंप्लीट द सेगमेंट. अ, तो हाँ, तो हम कह रहे थे, आई वाज़ सेइंग दैट अ, या सो mental exhaustion is not always long work hours. Sorry, it's many a times it's misalignment as well. Um, तो अगर आपको समझ आ गया that you are at a wrong place, you need to get out of there. Now you have to think about how to choose the right career in 2026. आप निकल तो जाओगे, पर आप जाओगे कहाँ? So that is the next thing that I'm going to talk about. How to choose the right career in 2026. Okay. uh, ठीक है. तो 2026 में ना बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं.
कंपेयर टू लेट्स से 10 ईयर पहले की बात करें, अगर हम 2016 की बात करें, 2016 से 2026 में बहुत चीजें चेंज हो गई है। सबसे बड़ी चीज जो चेंज हुई है वो एक है एआई बूम। ठीक है। अ, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी करियर पाथ को ले लो, दिस इज अ हार्ड फैक्ट, हार्ड चेक समझ लो, बिटर ट्रूथ समझ लो, इट्स अ रियलिटी कि एआई के अराउंड चीजें हो रही हैं, काम हो रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, आपको व्हाट इज दैट करियर पाथ और व्हाट इज दैट वर्क जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए आप सफर करने के लिए तैयार हो, यू आर मोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज योर वर्क डिजायर्स और डिमांड्स योर प्रेजेंस, योर ऑल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 to 5 है, कहने के लिए 9 to 5 है। इफ यू डू नॉट पुट इन ऑल ऑफ योर माइंड एंड हार्ट एंड सोल इन टू इट, आई डोंट थिंक वर्क होता है, कहने के लिए होता है। तो द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, व्हाट एम आई विलिंग टू सफर फॉर मोस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंटली। ठीक है, बिकॉज एवरी करियर हैज बोरिंग पार्ट्स, 9 to 5 होगा। वो बोलते हैं ना, डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर 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 देन मोटिवेशन। तो डिसिप्लिन्ड होकर के आपको करना ही पड़ेगा। तो वो काम करने के लिए ऑब्वियसली आप जॉब लेंगे तो आपके पास स्किल्स होंगी। तो अल्टीमेटली द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, व्हाट स्किल सेट इज what skill set do I have that I'm most passionate about, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा पैशनेट है, और जिसको डेवलप करने के लिए, जिसके अराउंड काम करने के लिए आई एम मोस्ट excited to work. So one important line that I always believe in is, passion gets you started and skills keep you relevant. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास कौन सी स्किल सेट है जो जिसके अराउंड आप काम करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, या कौन सी स्किल सेट डेवलप करने के लिए आप एक्साइटेड हैं। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है और आप सीखना चाहते हैं, तो फिर अगेन यू हैव टू वेट, गिव योरसेल्फ, आई वुड सजेस्ट गिव योरसेल्फ 3 to 6 months टू डेवलप, मास्टर दैट स्किल। अगर आपको किसी डोमेन में जॉब चाहिए, आप उस स्किल को मास्टर कर लो ताकि आपसे आगे कोई नहीं हो। बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर वुड बी पीपल जो आपसे पहले ही उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे। बट टू मेक यू द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, आपको डिसाइड करना होगा कौन सी स्किल सेट आप डेवलप एंड ग्रूम करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन। नीरज, नीरज इज सेइंग, नाइस, आई एग्री, अ पर्सन शुड फॉलो हिज डिजायर job, but if that job is that person dream job, then he loves it, how can he suffer for it? Exactly, kind of my point, and rightly put, Neeraj. uh, the thing that I was also thinking of doing is take live career Q&A from y'all, but I think let's just keep this for the last, ये towards the end रखते हैं। ठीक है, इसके beyond move करते हैं। The third thing that I'm going to cover, and uske baad we'll just come back to it. So yeah, the next thing that I'm going to talk about is what nobody tells you about corporate life. Now, why I'm talking about this in choosing the right career path, and अपने burnout को prevent करने के लिए, अपने current exhausting work career से escape करने के लिए, is because देयर आर थिंग्स जो कॉर्पोरेट लाइफ में आप ये सोच के न्यू जॉब में नहीं घुस सकते कि अच्छा जो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है वो मेरे को कहीं और नहीं मिलेगा, एंड दैट कैन नॉट बी योर ओनली रीजन टू एस्केप अ करंट करियर।
कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ चीजें हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी. फर्स्ट, loneliness. Nobody will tell you that adulthood, becoming an adult, choosing a career, working towards that career can be extremely lonely. आपको खुद ही काम करना है, आपको अकेले ही काम करना है, आपको कॉर्पोरेट लैडर भी अकेले ही चढ़नी है. इफ यू आर प्लानिंग टू, आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल आर प्लानिंग टू डू इट वेरी एथिकली. इफ यू आर प्लानिंग टू डू थिंग्स एथिकली, यू हैव टू, यू नो, चीजें खुद ही करनी है. और सब चीज हो जाती है, खुद से हो जाती है. वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. हो जाता है, सब कुछ हो जाता है. आई मीन, वो होता है ना, लाइफ में पीक्स आते हैं, डाउनफॉल्स भी होंगे बहुत. आपको लगेगा कि देयर इज नोबडी इन द कंपनी हु स्टैंड्स फॉर मी. मेरा काम कोई नोटिस नहीं कर रहा है, एंड आई एम बर्निंग माई सेल्फ सुबह रात. आई हैव स्लेप्ट ओनली फॉर 4 hours, बट नोबडी इज अप्रिशिएटिंग मी. दैट हैपेंस एवरीवेयर. यू स्टिल हैव टू वर्क. और ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा. Somewhere, because hard work always, I'm a hard believer in the fact that hard work always gets noticed. एक जगह नहीं तो दूसरी जगह. So this is one reality जो corporate में हर जगह होगी. Second, burnout. Even if you're doing your dream job, वहां पे भी burnout होगा ही होगा. Because you're constantly working for something. You're constantly kind of doing monotonous work. सेम काम आप कर ही रहे हो. वीकेंड्स भी आपको सफिशिएंट नहीं लग रही है. बर्नआउट होगा ही. कंपैरिजन. You will be compared to a fellow employee. You will compare yourself to a fellow employee. और ये सबसे ज्यादा होता है अप्रेजल. अप्रेजल सीजन के टाइम ये सबसे ज्यादा होता है. एंड आई बिलीव ये कंपैरिजन की वजह से ही people switch jobs also. I know a person, excellent, excellent product manager, great work ethics, gave 5 to 7 years of his life to to this particular company, dedicated his life, his talent, his skills to the company. Still appraisal हुआ तो उनको rating, he didn't get ratings which were at par with his expectations. उनको promotion नहीं मिला. He didn't get appraisal. He ended up leaving the company. Now he's working in another company, doing great there. वहाँ पे भी उनके skills are getting noticed and he's doing wonders there. But again, I don't know what will happen, and I always wish him the best. Not saying that this won't happen, but ये कंपैरिजन वाला फैक्टर हमेशा आता है. आई हैड अ मैनेजर इन वन ऑफ द कंपनीज, वन ऑफ माय पास्ट कंपनीज. ही वर्कड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर 15 years. 15 साल उन्होंने इस कंपनी में काम किया था. हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे. जब अप्रेजल का टाइम आया, रेटिंग्स की बात आई, ऑफ कोर्स वो, मतलब, ही वाज अ मैन ऑफ एथिक्स. बहुत अच्छा काम करते थे. ग्रेट मैन. अमेजिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी थी. अ, उनको रेटिंग के टाइम पे अगेन वैसी रेटिंग नहीं मिली जैसी उनको मिलनी चाहिए थी. 15 साल काम करने के बाद, बीइंग इन द सीनियर मैनेजमेंट, ही एंडेड अप लीविंग द कंपनी एंड स्टार्टेड वर्किंग समवेयर एल्स. इमीडिएटली उनको हायर भी कर लिया गया क्योंकि उनके इतने बढ़िया स्किल सेट्स थे. ही वाज सो क्वालिफाइड. गॉट अनदर जॉब, गॉट अराउंड 50% हाइक, and he's working in another company. तो ये हर जगह होगा. So I'm setting your expectations अभी से ही कि अगर आप बोलो कि I'm going to do my dream job, I'm going to love every moment of it. No, that will not happen. So yeah, so these are the things that nobody will tell you about corporate, but I have learned it the hard way. Nobody told me, but I am kind of like your, consider me your elder sister or whatever. I am giving you this advice. Uh,
Neeraj is saying, I'm a veterinary doctor with PhD in molecular biology. I love R&D, but I am confused whether joining a private company is the right choice. How fulfilling is research life in the private sector? Funny, you have brought this up. So I have a friend. Uh, उनके साथ यही हुआ. मतलब I cannot, because I'm not from that career path. But हाँ ठीक है, great. We are on our life career Q&A वाला segment only. तो हम आपको ये बता रहे हैं. मेरी एक फ्रेंड, so she was working in a private company. She did BSc in physics. They ended up working in a private company. The pay was excellent, excellent. The facilities, amenities, सब बहुत ही अच्छा था. But the company that she was involved with, वो थोड़ा सा unethical काम, मतलब I will not say that वो company unethical काम करती थी. Of course, if the company is established, registered, काम अच्छा था. But उसके principles के according and research principles के according, the work that that company was doing was not ethical. Uh, she ended up leaving that company. She resigned. उनका पैकेज आधे से भी शायद कम हो गया था. शी एंडेड अप वर्किंग फॉर हर प्रोफेसर, जिनके लिए वो रिसर्च में इन्वॉल्व रहती थी. एंड या शी डिड दैट बिकॉज शी वाज नॉट फुलफिल्ड. मतलब उनके मन को ऐसे शांति नहीं मिलती थी वो काम करते हुए. इवन इफ द पे वाज अमेजिंग, फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, अमेनिटीज बहुत अच्छी थी, पर उनका मन नहीं मानता था. एंड सो शी एंडेड अप लीविंग. She started working for her professor. Research का ही core work करती थी, and she ended up कम कम earn करती थी, पर peace of mind I think is always greater, bigger. I hope that answers your question, Neeraj. uh, if I hope you will make the right choice. If anybody has any more questions related to this, we are going to take this segment forward before we close today's discussion on how to build a career you don't need to escape from. So Vivek is saying hi. If anybody has any more questions, I'm open to it. I'm answering questions related to career. This live is all about how to create a career you do not need to escape from, or how to escape from a career where you feel stuck and you need to think about the plans going forward. We'll keep the chat open for a couple of more minutes, and then we'll close down. Pranjal is asking, I did my BBA from Feroz. Just saying, this question and answer is not particularly for job. अगर आपको college education related advice भी चाहिए, because I have done multiple things. Uh, I have done my BTech, I've done my MBA, I have also cleared my 10th and 12th, so I feel qualified enough to answer your questions. तो आप ये भी पूछ सकते हैं. So I'll take Pranjal का question. Pranjal is asking, I did my BBA from Feroz Gandhi College. Can I have a future in corporate? Of course you can have. Of course you have a future in corporate. आप कहाँ
I'm sorry, I do not have idea about Feroz Gandhi College. Feroz Gandhi कहाँ पर है? I'll just check simultaneously. या आपको पता है तो आप ही बता दो Feroz Gandhi College is in which city? It's in Raebareli. Okay. Uh, of course you have a career in corporate. आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स का क्या सीन है? मतलब कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं कि स्टूडेंट्स हैव टू गो आउट एंड हंट फॉर जॉब्स themselves. No placement? Okay, irrespective of that, you have the skills. You can always make your profile on LinkedIn. LinkedIn is a very good platform. LinkedIn पे आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, build it. Naukri.com पे अपनी प्रोफाइल बना लो. Actively keep searching for jobs that are most aligned to your skill sets. अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई स्किल है बट आपके आपकी स्किल इज नॉट पॉलिश्ड इनफ, यू इट्स नॉट डेवलप्ड इनफ, आप अपनी स्किल्स पे काम करो साइमल्टेनियसली, अपना रेज्यूमे बिल्ड करो, नौकरी पे प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, keep updating your profile, stay very active on these job portals, simultaneously keep building your skill set, and once you are done, uh, just keep applying, keep interacting to people. LinkedIn पे there are so many people who आपको लोगों को रीच आउट करना होगा, कोल्ड मैसेजेस करने होंगे, नेटवर्किंग करनी होगी. आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी. Thousands of people you have to reach out. तब जाके maybe you will find the right fit. Much more easier path is Naukri. Indeed, there are so many platforms जहाँ पर आप अपने skill sets के basis पे you can just put out your resume and recruiters reach out to you themselves. Pranjal is saying how to make sure my resume is good enough for getting a job. Okay. Um, ठीक है, I'll do another series. वैसे I did a live session जहाँ पर I also helped people make their resume with the help of AI, and that video is still live on my Instagram. अगर आप वहाँ पे जाके comment करोगे, what I wanted to say, thank you everyone for joining my live. I hope all your questions are answered. If not, we'll do more live sessions. There are more live sessions to come, and we'll ask and answer more questions. Pranjal, आपका resume वाला जो question था, जो query था, you can go to my Instagram profile. वहाँ पर I have posted a reel जहाँ पर I did mention how to create your resume. If not, we'll do more videos on the resume series. Thank you so much for joining my live. Uh, it was great interacting with you all. Thank you. Bye. Good night, everyone.